Hello, viewers. This is Sharad Mohan and Adi Show. We both writers और हमारी बुक अगर आप हमारे नाम से सर्च करेंगे तो amazon.com पे और .in पे और सारी जगह मिलेगी. तो please do read us and also subscribe this channel Sattology. So आज का विषय व्यूअर्स एक इंटरेस्टिंग विषय है और अभी जस्ट दिल्ली का इलेक्शन हुआ और इंडिया में एवरी कुछ मंथ देयर इज अ स्टेट इलेक्शन और ये टॉपिक आजकल काफी डिस्कशन पे है, नॉट ओनली इंडिया बट इवन इन वेस्ट एज वेल, कि हिंदुत्व जो आजकल बीजेपी के साथ अलायन किया जाता है कि हिंदुत्व का बहुत जोर है एंड नो गवर्नमेंट इज बिकमिंग हिंदुत्व, हिंदुइज्म को छोड़ के हिंदुत्व की ओर जा रहे हैं. तो आपके मन में भी काफी क्वेश्चन होगा कि क्या सही है, आर दे फर्स्ट ऑफ ऑल दो डिफरेंट वर्ड, हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व, और इसमें से किसको सही माना जाए किसको नहीं माना जाए. तो सारे विषयों पे हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे और मैं कुछ पॉइंट रखूंगा और आदित्य जी उसको एक्सप्लेन करेंगे. सो आदित्य, हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म. सो आई विल स्टार्ट व्हाट yesterday there was a very good debate on Times Now और वहां पर अब मेरे बैंगलोर के यंग युवा एमपी तेजस्वी सूर्या ने काफी अच्छा पॉइंट रखा. ऑब्वियसली ही इज पुटिंग हिज पॉइंट एंड पार्टीज पॉइंट. तो तेजस्वी सूर्या का कहना ये था कि हिंदुइज्म, तो खैर एवरीबडी एग्रीड कि हिंदुइज्म इज अ स्पिरिचुअल थिंग, राइट, फेथ बेस्ड है, देयर इज नोबडी हैज एनी प्रॉब्लम विद दैट. हिंदुत्व व्हाट दे आर सेइंग इज नथिंग बट अ पॉलिटिकल काउंटर ऑफ जो इस्लामिक पॉलिटिकल इस्लाम जिसको बोलते हैं, राइट. पॉलिटिकल इस्लाम का ही कॉन्सेप्ट में आईएसआई बना, आईएसआईएस बना, अलकायदा, तालिबान, ये सब पॉलिटिकल इस्लाम मीनिंग कि आप पावर को ग्रैब करेंगे थ्रू अ फोर्स, हुक और क्रूक, चाहे उसके लिए रेडिकलाइजेशन हो. लोग बोले कि बिकॉज उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी हो रहा था तो इंडियन हिंदूज ने उसको काउंटर करने के लिए, जैसे सिख धर्म पहले कभी बना था तो वो एक धर्म बन के रह गया. सिमिलरली हिंदुत्व इज अ पॉलिटिकल हिंदुइज्म वेयर टू काउंटर Abrahamic faith atrocities so called, ऐसा लोग का कहना है, and this is what तेजस्वी said, जो कि Abrahamic faith का जो इंडिया जो onslaught है even in 20th century, people ask कि आप तो invaders की बात कर रहे हैं कि आज की, बोला नहीं, आज भी हो रहा है. तो उसको काउंटर के लिए ये पॉलिटिकल नरेशन आया हिंदुत्व. और उसने फिर एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह एंड जय श्री राम. तो उसने बोला कि जय श्री राम, जो मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स बोलते हैं कि जय श्री राम, हम लोग भी बोलते हैं बिकॉज राम तो थे इमाम हिंद थे, लेकिन जय श्री राम का एक्चुअल शाब्दिक मीनिंग यह है हेल टू द विक्टर राम. इट डजंट से एनीथिंग अबाउट XYZ. whereas la ilaha illallah means there is no Ram, there is no Jesus, it is only Allah, Allah, Allah. तो पूरा एकदम कॉन्फ्लिक्ट है इसमें, एकदम स्ट्रेट अवे कॉन्फ्लिक्ट है. तो ये सिनारियो है. नाउ यू एक्सप्लेन टू द व्यूअर्स कि क्या सही आप सोचते हैं, क्या हिंदुत्व हिंदुइज्म के डिफरेंसेस, और गिव सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड. सो सबसे पहले जो है, हिंदुइज्म इज ए कोलोकियल नेम फॉर वैदिक कल्चर. वो एवरीबॉडी नोस. जो वैदिक सनातन धर्म है उसका कोलोकियल नेम है. और द वर्ड हिंदू कम्स यूजुअली, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला है, काफी लोगों ने बोला है कि इट कम्स फ्रॉम हिमालय एंड हिंदू सागर का मिश्रण को हिंदू बना दिया. और जब वैदिक इन्वेडर्स आए तो सिंधु नदी है, सो सिंधु सागर में सिंधु नदी जाती है. सिंधु का मतलब होता है समुद्र, पानी. तो जो इंदुमती जो नदी है वो, और एरावती भी उसका नाम है, ये जो नदी जब गिरती है समुद्र में, उसको वो सिंधु महासागर है, सिंधु. तो वहां से नाम पड़ गया सिंध. और महाभारत में जयद्रथ का जो किंगडम है वो भी पाकिस्तान है. पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाज द किंगडम ऑफ जयद्रथ. बलूचिस्तान में उधर इंक्लूडेड है. ये 5000 साल पहले का हिस्टोरिकल फैक्ट है. तो अरबिक इन्वेडर जो लुटेरे लोग जो आए थे वहां से, मोहम्मद बिन कासिम और पर्शिया से जो भी आए थे अपना इस्लाम लेके, बाबर, ये सब जो लुटेरे लोग आए थे, आतंकवादी बोल सकते हैं आज के उन लोगों को, ये आतंकवादी टाइप के लोग थे सारे. ये सभी आतंकवादी जो आए, इस्लामिक आतंकवादी, जब इन्होंने अटैक किया तो उन्होंने जितने भी लोग इधर हिमालय के बीच में रहते सबको हिंदू बुलाया, सबको.
क्योंकि शायद उनका प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम रहेगा या जो भी रहेगा, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अल हिंद जो अरेबिक वर्ड है, अल हिंद, और गजवाए हिंद जो वो भी अरेबिक वर्ड है, जो मुल्लाओं ने अरब अरब सीरिया में बनाया ये शब्द। तो ऐसा मतलब नहीं है कि हिंदू शब्द था ही नहीं, हिंदू शब्द जो है बहुत पहले से था, और ये अरब लोगों को भी मालूम था अच्छी तरह कि अल हिंद वहां पर है। तो ये बोलना कि हिंदू शब्द नया है, इसका कोई वो शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, वो गलत है। चैतन्य महाप्रभु जो है, जो गौड़िया वैष्णव के संस्थापक भी हैं, उन्होंने भक्ति मूवमेंट चलाया। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं हिंदू शब्द यूज किया है, और बहुत सारे गौड़िया वैष्णव जो है चैतन्य महाप्रभु को भगवान का, कृष्ण का अवतार भी मानते हैं। तो उनके मुंह से भी वर्ड हिंदू आया है। तो ये जो हिंदुइज्म है वो इंग्लिश वर्ड है हिंदू के, मतलब जैसे इंग्लिश में मतलब कोई भी चीज में इज्म लगा देते हैं तो इट बिकम्स लाइक ए साइंस स्टडी हो गया, इट बिकम्स अ नाउन। सो हिंदुइज्म हैज बिकम एक वेरी कोलोक्वल वर्ड इन इंग्लिश टू डिस्क्राइब द एंटायर वैदिक कल्चर, वेरी कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश लिटरेचर। हिंदुत्व, जैसे अभी हम विष्णु तत्व बोलते हैं, शिव तत्व बोलते हैं, या भक्ति तत्व बोलते हैं, किसी भी चीज का प्रिंसिपल को हम तत्व बोलते हैं। तो अगर उसी शब्द हिंदुइज्म जो इंग्लिश में बोला है, उसी को जब हम हिंदी में बोलते हैं या संस्कृत में बोलते हैं, उसको बोलेंगे हिंदुत्व। अभी जैसे कभी हम और आप डिस्कशन कर रहे हैं सत्योलॉजी पे, तो हम लोग सत्योलॉजी तत्व भी बोल सकते हैं या सत्तत्व भी बोल सकते हैं, वो संस्कृत का वर्ड हो गया। तो तत्व जो वर्ड है, दैट व्हेन इट इज अटैच्ड इट बिकम्स अ सिमिलर मीनिंग टू द इंग्लिश वर्ड ऑफ इज्म और लॉजी। तो ये जो सत्व बोलते हैं, मिथत्व बोलते हैं, कर्तत्व बोलते हैं, लाइक देयर मेनी डिफरेंट वेरिएशन वी कैन पुट फॉर तत्व। सो हिंदुत्व इज जस्ट ए हिंदी वर्ड फॉर ए कोलोक्वल टर्म फॉर हिंदुइज्म। नाउ दिस इज अ डिनोटेशन मतलब ये लिटरल ट्रांसलेशन वर्ड का हुआ, बट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज कनोटेशन। कनोटेशन मतलब व्हाट इट रिप्रेजेंट, जैसे आपने जय श्री राम के बारे में बहुत अच्छा बताया। तो इन द वेस्ट, अभी वेस्ट में जो है लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये सब बहुत चलता है। तो जैसे इजराइल में मुसलमान लोग बोलते हैं कि जुडाइज्म इज गुड बट जायनिज्म इज बैड। मतलब जायनिज्म एग्जैक्टली सेम फिलॉसफी थिंग व्हाट तेजस्वी ने बोला कि Jews when they wanted to protect themselves they created a political party with political ambitions and that became Zionism, and it's an officially recognized term in Israel. So they also refer to themselves as Zionist, which is just nothing but same thing which is Hindutva. Now Islamic organizations oppose Zionism, but they want to be in favor of Judaism. This is a literal foolishness on part of Islamic groups. Entire leftist academicians in the US and UK, all these people. So they are actually anti-Semites, but they have created similarly anti-Semite, but they are saying कि अगर कोई अच्छा follow करने religion, somebody is following Judaism, good, but if he is in political power, he will be called a Zionist. So this is an Islamic attack on the very existence of Hindu culture. Now same thing in India के लिए भी उन्होंने किया, same thing they did. Hinduism is good, हिंदुत्व is bad. अरे भाई जो हिंदुत्व कर रहा है वो हिंदुइज्म में है, तो एक शब्द इंग्लिश का है और एक शब्द है एक शब्द हिंदी का है। तो I think there is a lack of strategy in understanding there. According to us, the connotation is when the Hindu starts become, for us it's the same word, Hinduism. Hinduism will also resist entire Islamic taqwa, taqiya, whatever they call it, Ghazwa Hind, and Hinduism itself demands that Dharma is established in Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh. They all three should leave their Islamic religion and join Hinduism back. Garvapsi. So as per Hinduism, it can be a very controversial thing to say, but Hinduism itself is like that. Sanatan Dharma is like that. Sanatan Dharma means Dharma Samstapana ke liye we have to establish force. But to say that Hindutva is bad and Hinduism is good, and I heard Devdutt Patnaik also, every day he's tweeting on Hindutva is bad, Hindutva is this, Hindutva is that. But I would like to educate Devdutt Patnaik ji also that you are just proving yourself to be an academic idiot. You are just trying to say something
which is literally doesn't make sense. And Devdutt Patnaik is known for exaggerations, known for mistranslations. That guy has become a big brand because he's supported by the leftist and mostly American. Rupa Publications support them, which is pretty much a leftist organization. I think I would never get my book published by Rupa Publications in any way. So I think this correction, since we are talking, this correction has to happen, where the connotation and denotation has to be separated. And the Western use of Hindutva is good, Hinduism is bad. That is a conspiracy, completely conspiracy. So Okay. how do we defend? That is a thing that we all have to think about. Okay. So ठीक है. I think you explained well your understanding of connotation and denotation. Or connotation is what people are mainly referring. Explanation ठीक है. Hindutva, the other party will say, I don't know Hindi and I don't understand Sanskrit, तो तत्व हम नहीं समझ पाए. So denotation जो भी हो, connotation is important, and connotation ये बोलता है कि what you are saying is they are same, and because and that is what also Tejasvi ने भी indirectly वही कहा कि the reason why this has come up, and he didn't apologize. He was pretty vocal on that by saying कि Hindutva is why Hindutva is needed, and he gave his reason. So again, but as of now, अगर आप इंडिया देखेंगे तो जैसे कि थोड़ा सा डिविएशन कर रहा हूँ, लेकिन अभी जैसे दिल्ली में जो चुनाव हुआ और केजरीवाल की जीत हुई, लोग यही बोल रहे हैं कि देखिए केजरीवाल हिंदू बाय फेथ हिंदू है, बाय बर्थ हिंदू है, बाय प्रैक्टिस हिंदू है, लेकिन पॉलिटिकली उसने एक लाइन बनाया, लेकिन फिर भी वो सॉफ्ट हिंदुत्व को उसने अपनाया, विच इज अगर मेरा कल्चर अगर जय हनुमान बोलना है, हनुमान चालीसा बोलना है, तो आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम डूइंग दैट. एंड that actually काफी जो फ्रिंज पे वोटर्स थे जो अभी डिसाइड नहीं किए थे, they eventually fell for it, right? Good or bad is a different आप किस पार्टी से उसके हिसाब से. तो now हिंदुत्व की जो ये जो so people will also have an argument आदि कि इंडिया में आपको हिंदुत्व आपको जब लड़ना, you are fighting अगर radicalization and global war इस्लाम से, पाकिस्तान हो गया या अभी से आपको प्रॉब्लम हो रही है, सेकुलर और हिंदू मेजॉरिटी राष्ट्र है, जहां अंत निरपेक्ष राष्ट्र है जो फाइट कर रहा है कश्मीर पे, जो कश्मीर इज सीन बाय दीज 3 कंट्रीज एंड मेनी सच कंट्रीज जो चुपचाप भी बैठे हुए हैं एज अ प्योरली इस्लामिक. तो जो इंडिया जो फाइट कर रहा है अपने सॉवरेनिटी पे, इसको बिकॉज अभी बीजेपी है तो दे कैन नॉट से कि सॉवरेन इंडिया इज फाइटिंग, दे आर पुटिंग इट एज अ हिंदुत्व की लड़ाई, एंड देन दे आर रिलेटिंग इट विद एक दो इंसिडेंट हुआ जैसे कि लिंचिंग वगैरह पे, कि देखिए हिंदुत्व ने ही ये सब करवाया, हिंदुत्व ने किसी एक अखलाक को मार दिया, किसी इसको मार दिया. तो हिंदू के जो पूरे गांव के गांव को लगे रिसेंटली, करेक्ट. तो वो लोग बोले कि आप कितना पीछे जाओगे. सो अगर आप 1947 के बाद लोग बात कर रहे हैं, तो ऑल दिस थिंग्स जो डिबेट का इशू जो हम लोग को क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, हमारे जैसे नहीं, जैसे हिंदू जो लुकिंग टू दिस प्रोग्राम टू गेट क्लैरिटी फ्रॉम यू, इससे कि हम कैसे प्रॉपरली काउंटर करें इन अ फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर आपका संविधान श्रेष्ठ है, रूल ऑफ लॉ श्रेष्ठ है, तो आपको क्यों चाहिए एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू फाइट अगेंस्ट ऑल दिस? यू हैव कोर्ट्स, यू हैव योर ओन संविधान, आप वहां पे क्यों नहीं सॉल्व करना चाह रहे हैं? तो आप क्या बोलेंगे इस पे? कहाँ इक्वालिटी है, कहाँ इक्वालिटी? कौन सा मुसलमान रिस्पेक्ट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वो तो धज्जियां उड़ा देते हैं. शाहबानो केस इज वन. तो फॉर मुस्लिम दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Indian constitution is respected only by the Hindus. So because of their respect in Indian constitution, therefore India is still a democratic and secular country. नहीं तो Hindu majority country should not be secular. It should be Hindu Rashtra. So now Muslims have to make a choice whether they want to respect Indian constitution or they want to respect Sharia law. If they want to respect Sharia law, then the complete Sharia law should be applied to them and only on the Muslim community, no one else. Once it is applied on them, I guarantee you, by evening, most of the Muslims won't be left in India. And in just one day. Because everywhere else they run away from Sharia law.
and the IPC code should be applied only when and the IPC code should be applied only when a Muslim tries to attack a Hindu or non-Muslim. Then it should be decided by the IPC code. But when a Muslim is having criminal activity within Muslim community, only Sharia law should be applied. And for a Muslim, Sharia law should be only be applied. For a Hindu, IPC law should be applied. Once the day we make this segregation and declare India as a sovereign, whatever secular nation, it is already a secular nation because Hinduism is a majority religion. And the day it is applied, it will be solved most of the problems. And as far as Hindutva and Hinduism goes, Hindutva being painted negative is an international conspiracy. It is a conspiracy by the Western countries and Islamic countries against the Hindus of India. Directly, it's a direct attack. Whether Hindus take it lightly or not lightly, it is a problem because all Indian universities, in order to maintain their international reputation, have to take funds or they have to tie up with international bodies, and they are forced to take this ideology as a paper. So when they have an alliance with the American university, the American professor says this is the version we are teaching and you have to teach the same version. If you deviate from that, and our alliance is off. I think that's where India has to also make their education independent of all Islamic as well as Western influences. So it's a big fight. So Hindutva versus Hinduism is a conspiracy against India. Interesting view on the education part and Sharia part, but then with that will be like within India you have a two nation within India. No, कल को Sharia होगा. No, not two nation. Only for the community, communal law. But in any case, Muslim. फिर आ जाएगा कि शरिया को जो एग्जीक्यूशन बॉडी है, मीनिंग कि वो एक उसी फेथ के मानने वाला से ही मैं कोड़ा खाऊंगा, उसी फेथ से को मानने वाले के कमांडर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. It will be a separate division, Supreme Court of India, only for Sharia law, only for 200 million Muslims. एक बार ऐसा हो गया, there will be no Muslim left. I guarantee you, sir, because it will be done because every single Islamic country has Muslims running away from Sharia law. Every Muslim is running away. They say Taliban is not Muslim, but Taliban believes they are the perfect followers of Quran. So why they are running? And I'll tell you, every day Ghar Wapsi will win millions. एक ये law लगा दिया that Muslims have to follow Sharia law to the hilt, and the law will ensure they get punished accordingly. बस हो गया खत्म. नहीं तो हम लोग punish करेंगे. Then no, their law doesn't work. I think this has to be told very directly because there should be no political correctness there. That if you too much Allah you do, then follow the rule of Allah also. Why you want to take advantage of civil laws of India? Allah is great. Allah Akbar. Go ahead. If you say so much about Islam, then follow it completely. Why you are not? That's why Arabic countries call all the Muslims of Pakistan, India, and Bangladesh as kafir. You see, if you go to Saudi Arabia, there is no house of Muhammad, nothing. Masjid or mosque is not a sacred place. So why not? Same thing in India. What they do is they use the Hindu laws to make mosque a sacred place. What ideally the mosque is not a sacred place. Exactly, yeah. So India should remove all the mosques because it's not a sacred place. And that is how 200 साल 500 साल आप राम जन्मभूमि पर लड़े हैं. यहाँ पे India is a strange, very strange. I think Max Muller and Macaulay have completely destroyed Indian brains. And also after that KGB with this Stalinist. But मैं दूसरे एंगल से ये भी देखता हूँ, not very clear cut सर्जिकल स्टेप्स, बट अगर मैं दूसरे एंगल से देखता हूँ कि अगर 200 मिलियन मुसलमान आपके यहाँ हैं और वर्ल्ड को अगर रेडिकलाइजेशन से बचा सकता है तो उसको इंडियनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड मुस्लिम, जो कि हमारे अगेन यू विल हैव योर ओन व्यूज. माय व्यू इज 200 मिलियन में चलिए पहले 5% रेडिकलाइज और क्लियर कट थे, अभी संख्या बढ़ के 20-25% हो गई है, और 70% इज स्टिल इंडियनाइज्ड इन अ लॉट ऑफ वे. वर्ल्ड को अगर बचाना है रेडिकलाइजेशन से तो
world first step will be the Indianization of the world Muslim, because Indian Muslims at least have coexisted with a with a larger, harmful, they have because coexisted. there is a step. Yeah. Go ahead. So because you विशफुल थिंकिंग से 52 देश 57 देश रातों रात नहीं बदल सकती. There is a step. Even in medical science there is a step, right? There is a step of अच्छा, making आपको them. एक न्यूज बोलता हूँ. अभी जस्ट यस्टरडे सऊदी अरेबिया अलाउड मुस्लिम्स टू स्मोक इन पब्लिक. Yeah. मुस्लिम विमेन. Saudi Arabia is doing this because of the commercial reason, because they know कि 30 साल में वहाँ पे गैस खत्म हो रही है. Tourism and investment will तभी come when they are letting go their image of very कट्टरवाद. Saudi Arabia is actually, अगर देखा जाए तो 10 step ahead in thinking that situation. So which should be appreciated actually. तो why not Pakistan allowing all Muslims to smoke? पाकिस्तान तो एक भिखारी देश है भाई. कहाँ आप राजा से एक So all India personal law board, why not allowing women to smoke? अभी आपने पढ़ा ना मैम, बाबर जो कि बाबर was for what? See, बाबर. तो मेरा पॉइंट क्या है शरद जी, why India should be protecting their faith? India is a Hindu country. If their religion happens anything, it is their responsibility, not our responsibility. We have to protect only our Hindu people from their attacks. We are only defending. We are not trying to attack them. But right now, offense is the only defense against them. So abhi we have to prove that Hindutva is good, Hinduism is also good. Both are good. Both are needed right now. और जब तक ये Muslim community doesn't face direct questioning by us, which we are already doing through Sattology, through history, we are talking scientifically. We have historical facts. You're a historian. You are collecting facts. We are challenging them on facts. Now they have to answer us. If they don't answer, that is their problem. But these questions which are asking, if they don't answer and do not satisfy, will lead to further action by us, because we are not going to stop. Pakistan is a Hindu country, Afghanistan is a Hindu country, and Bangladesh is a Hindu country. They all have to merge back with India. It is a lost land of Hindus. हमारे religious places हैं. Are you saying कि the mullahs given Ghazwa Hind concept का counter अखंड भारत है? Absolutely. Because so अखंड भारत is a countering that concept. Absolutely. Ghazwa Hind. Absolutely. धर्म युद्ध, अगर वो जिहाद बोल रहे हैं तो हमारा धर्म युद्ध है. So they have to be prepared, because हमारे तो भगवद गीता में लिखा है यदा धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम तद्धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. तो भगवान कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए बार बार आते हैं, और धर्म की स्थापना हमारे जैसे सेवक भी कर सकते हैं कृष्ण भगवान के लिए. So we have to use Bhagavad Gita as a strength, not as a weakness, and we have to use it for the purpose of establishing dharma back in those lands where the dharma used to flourish. हमारा मूल स्थान, मुल्तान का नाम तो मूल स्थान था, लाहौर लव का जगह है, और पूरा नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान भरत महाराज का था. रामायण काल से हमारे जगह है, ये महाभारत में भी थे. तो ये टेम्परेरी जो हमने पिछले 500-600 साल में जो खोया है, not more than 135 years I will say, we have to get that back. नहीं तो ये these people are not going to stop. They have destroyed every single land they live in. 52 Islamic countries बोलते हैं. Tell me even one which is peaceful. Any one. Yeah. So why do they exist then? The next question is, if not a single one is peaceful, then why we need those countries when people are already suffering there? So what is the solution? Either Hindus sit on the side and look at them, nothing happening, or Hindus do something about it. Our dharma says we got to do something about it. We need to go there and establish dharma. So अगर हम ऐसा नहीं कर रहे तो हम कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं, ना हम राम की सेवा कर रहे हैं. हम अपने आप को हिंदू बुलाते हैं, ना हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, ना राम की सेवा कर रहे हैं. तो अगर हम धर्म की सेवा नहीं कर रहे हैं तो हमारी रक्षा धर्म कैसे करेगा? धर्मो रक्षति रक्षितः. उसका काउंटर ये आदित्य तुमको फेस करना पड़ेगा कि भारत एक
एक यंग नेशन है. इन यंग नेशन मीन्स की यंग बना नहीं है, यंग इन से पॉपुलेशन वाइज 65% पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन पीपल अंडर द एज ऑफ 35. दैट इज अ मिलियंस ऑफ पीपल. तो बोलेंगे लोग कि भाई इतनी बेरोजगारी है, लोगों को आप जॉब नहीं दे रहे हैं, बच्चे को डे टू डे सर्वाइवल का इश्यूज है, आप उसको नेक्स्ट लेवल. सो रिलीजन एंड फेथ एंड दीस टाइप ऑफ थिंग्स इज अ एडवांस्ड माइंड का रिक्वायरमेंट. आप बेसिक खाने से ऊपर नहीं उठ पाए, स्टमक से आप न्यूरो तक नहीं जा पाए, आप बोले स्टेट ऑफ न्यूरो से स्टार्ट करो. सो नहीं, एक बात इसको आप कैसे सुनिए, काउंटर करेंगे? ये सब क्या आप जवाब दें? हाँ, ये सब जो आप बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, दीज आर वेस्टर्न थॉट्स. इंडियन थॉट है सनातन वर्णाश्रम, और सनातन धर्म इंक्लूड्स एवरीथिंग. इट्स साइंस, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग कंबाइंड इनटू वन. We cannot be a different person in the office and a different person at home, even though that is an occupational requirement also. We cannot behave like office in the home. Sanatan Dharma में everything is included. So Sanatan Dharma में जो concept होता है कि धर्म से जो गवर्नमेंट भी धर्म की सेवा करेगी और इंडिविजुअल भी धर्म की सेवा करेगा, दोनों धर्म की सेवा करेंगे. तो गवर्नमेंट, द ओनली पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेंस इज टू सर्व धर्म, और धर्म से ही मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो सकता है, और विदाउट दैट नहीं हो सकता. धर्म का मतलब होता है इट्स ए कंपल्सरी ड्यूटी, इट्स ए एसेंशियल एक्ट. लाइक पानी का धर्म इज लिक्विडिटी. प्रभुपाद ने बहुत अच्छा तरह बताया, और इस तरह बहुत सारे आचार्यों ने भी सेम एक्सप्लेनेशन दिया है. तो धर्म जो होता है, एनी लॉजिकल एंड रीजनेबल एक्शन इज कॉल्ड धर्म. तो विच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ मैक्सिमम पीपल. तो अगर गवर्नमेंट इंडिया चला रही है, अगर वो धार्मिक उद्देश्य से चला रही है, सो इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल्सो प्रोटेक्ट अदर्स हु आर सफरिंग. व्हाई इज इंडिया नॉट सेंडिंग ट्रूप्स टू वेयर पीपल आर सफरिंग? क्या ऐसा क्या है? इतनी बड़ी सेना जो है, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस आर बिगर देन ऑल द कंट्रीज ऑन द वेस्ट पुट टुगेदर. पाकिस्तान से लेके सऊदी अरेबिया को अगर जोड़ देंगे, सारी सेनाओं को इकट्ठा कर देंगे, तब भी हम उससे बड़े हैं. Can you imagine the power which we have? But we are not doing anything for Dharma. That army is just sitting. So we have to, if Indian government has to play an active role, and we have to start implement, like just like USA exports democracy, we have to start exporting Dharma. That's the only solution we have, and that will also solve one of the important points which you and I were discussing, of creating more opportunity Hindu youth. They have to become the preachers of Dharma and implementers of Dharma. See, Chandragupta Maurya is an excellent example. Chanakya Rishi. चाणक्य ऋषि ने चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीस और आगे तक भेजा धर्म स्थापना के लिए, so that everyone is peaceful. And actually, there are Greek historians who appreciate Chandragupta Maurya's rule over Greece and Western Europe. There is a recorded history in my first book also. So धर्म से ही शांति आती है, और धर्म से ही भगवद गीता बोलते हैं, भोक्ता राम वेगे तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्यति. अगर सबको शांति चाहिए तो कृष्ण को सरेंडर करना ही पड़ेगा. I am unapologetic about it, because Krishna is Sanatan Dharma is Krishna. There is no other way. अगर राम राज्य चाहिए तो राम चाहिए ही पड़ेगा, और राम का बाण भी चाहिए. फिर सिर्फ राम राज्य के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं. तो we'll stop here, but I think viewers, आपने अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं. The viewers should know that Hinduism and Hindutva is the same thing. There's no difference. Hinduism is in English, Hindutva is in Hindi, and they both represent Sanatan Dharma. And Sanatan Dharma requires us to fight against all aggressors. Okay. Oh, thank you, viewers. That was really good insight from Aditya. और सर आप देखते रहिए, और start donating us few dollars so that हम लोग इस तरह प्रोग्राम बनाते रहें. Thank you. Thank you. Namaskar.